A very good morning to all of you. Welcome back to the channel. So here we are starting with the analysis video for 8th of September. So first important topic is that African Union G20 को join करने जा रहा है. Finally, there's a deal on this, and this is definitely a big development. So membership of the African Union in the grouping, it appears to be major breakthrough. Both Russian and Chinese officials, they have also backed this move, and now it comes to the naming of G20. So क्या इसको रीनेम किया जाएगा to G21 वो देखने की बात है. But again African Union का ज्वाइन करना बहुत important हो जाता है. At the same time जब हम बात करते हैं कि इंडिया और अफ्रीकन एज अ होल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में जो कोलैबोरेशन है, इंडिया के जो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एंड क्या स्ट्रैटेजिक एरियाज हैं, क्या और पोटेंशियल एरियाज हैं जहाँ पे वी कैन फर्दर कोऑपरेट एंड एक्सप्लोर. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है. अपार्ट फ्रॉम दिस नेमिंग, अभी इट इज नॉट क्लियर कि वेदर इट वुड बी रीनेम टू G21 और नॉट. एंड अगेन इसको आप कनेक्ट कर सकते हो विद ग्लोबल साउथ ऑल्सो कि अफ्रीकन यूनियन ज्वाइनिंग G20 एंड वी आर सीइंग कि इवन उसमें जी और ग्लोबल साउथ की वॉइस में भी इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो एवरीथिंग इज इन अ वे इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. देन अगेन इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इन रिवाइविंग द ब्लैक सी ग्रेन डील. सो यू कैन सी कि मल्टीपल एरियाज में इंडिया का रोल कैसे इंक्रीज हो रहा है. So as world leaders they gather in Delhi for the G20 summit, United Nations Secretary General का कहना ये है कि again उनका one of the main objectives is to revive this Black Sea grain initiatives. And recently there were talks, but Russia again it did not cooperate या it backed out. कुछ conditions रशिया ने impose करी जो वेस्ट को फुलफिल करनी important है, तभी उन्होंने बोला है कि इस डील को रिवाइव किया जा सकता है. तो अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे लिए मैप वर्क भी इम्पोर्टेंट हो जाता है अराउंड द ब्लैक सी. आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए, कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है ब्लैक सी को एंड कौन सी रिवर्स ड्रेन करती है ब्लैक सी के अंदर. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मैप. एंड अगेन ब्लैक सी ग्रेन डील जो फेल हुई, वी कैन से टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद से व्हाई इट इज सच अ बिग कंसर्न फॉर अस कि ग्लोबली इट इज इम्पैक्टिंग द सीरियल इन्फ्लेशन एंड ओवरऑल भी इन्फ्लेशन इतना बड़ा चैलेंज हो चुका है. तो अगर आगे चीजें और ज्यादा खराब होंगी तो अगेन दिस वुड बी अ रिस्की सिचुएशन ग्लोबल लेवल पे. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अगेन रिवाइवल ऑफ दिस डील इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंडिया आसियान रिलेशंस की हम बात करें, ये एक इम्पोर्टेंट डिमेंशन हो जाता है. इसके अलावा जब हम बात करते हैं, भी रिसेंटली आसियान समिट हुआ है, तो आसियान आपको मेंबर कंट्रीज पता होना चाहिए. देयर आर 10 मेंबर कंट्रीज. अपार्ट फ्रॉम दिस अभी रिसेंटली समिट में प्राइम मिनिस्टर ही प्रेजेंटेड 12 पॉइंट प्रपोजल. सो 12 पॉइंट में इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. अगेन यहाँ पे अगर हम देखें, आसियान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन एरियाज लाइक कनेक्टिविटी, ट्रेड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड रूल बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. अपार्ट फ्रॉम दिस रिसेंटली जो भी अनाउंसमेंट्स की गई हैं, सो प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया दैट इज इन एरियाज लाइक इस्टेब्लिश करना एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर जो लिंक करेगा साउथ ईस्ट एशिया को, एशिया इंडिया को, वेस्ट एशिया एंड यूरोप. And also India would be offering the digital public infrastructure stack with the ASEAN partners. So we'll be sharing it with the member countries of ASEAN. And और जो बाकी चीजें रेज की गई, कलेक्टिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, साइबर डिसइंफॉर्मेशन एंड फॉर रेजिंग द इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय ग्लोबल साउथ इन द मल्टीलेटरल फोरा. तो ये सारे अगर आप बात करो कि ग्लोबल लेवल पे जो इश्यूज हैं या जो मेन एरियाज ऑफ कंसर्न है, हमारी प्रायोरिटीज हैं, वो यहाँ पे सारी लिस्टेड है. एशिया पैसिफिक रीजन की अगर हम बात करें, डील्स विद द इश्यूज रिलेटिंग टू सिक्योरिटी एंड डिफेंस,
यहाँ पे भी joint efforts important role play करते हैं to strengthen the sovereignty and territorial integrity of all the nations. And इंडिया का ये भी मानना है कि हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर साउथ चाइना सी, it should be effective, and countries they need to comply with the United Nations Convention on the Law of Sea. So in a way, we are indirectly talking about the growing assertiveness of China in the South China Sea. So जब हम invasive species की बात करते हैं तो in this picture you can see the water hyacinth. तो आप देख रहे हो कि पूरी रिवर वाटर बॉडी जो भी है ये इसका पूरा सरफेस कवर्ड है, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है, इवन फिशिंग में, एंड लीड्स टू ब्रीडिंग ऑफ डिजीज कैरिंग मस्किटो एज वेल. So this is a picture from Kochi, from the Vembanad backwaters, which is you can see choking the entire ecosystem over there. तो obviously जो biodiversity है, marine life है, उसके ऊपर भी इसका negative impact आता है, because in a way ये prevent करता है sunlight को water के अंदर penetrate करने से. So one of the major security breach has been reported from the Idukki Dam. आपको location, exact location पता होना चाहिए, कौन से river के ऊपर located है. And here we're seeing unidentified persons. They have placed locks on the earthing strips of 8 high mast lights on this dam, which the authorities consider major security breach. So a type of liquid that was also poured on the wire rope of the dam shutters. So action has been taken, FIR launch कर दी गई है. Even 11 locks they have been retrieved from the high mast lights. And obviously अगर आप इसके repercussions के बारे में सोचोगे तो it can be massive. So we talk about disappearing languages, vanishing voices. Here we have the index of linguistic diversity. It was introduced to quantitatively understand कि past 30 years का trend क्या रहा है in terms of the numbers of mother tongue speakers of the world's languages. That is a measure to gauge कि languages का decline जो है उसको समझना. And एक लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स और होता है, दैट इज अ सेपरेट इंडेक्स फ्रॉम दिस, जहाँ पे the probability that two people selected from the population at random, they will have different mother tongues. So it ranges from 0 to 1. 0 means everyone has the same mother tongue, and 1 is no two people have the same mother tongue. So यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया का स्कोर, India's score was 0.930. So we can say कि predominant language UK में it is English, as USA में भी English है due to significant presence of migrants. And again उनका score आप देख सकते हो, it is lower than India. So indicate यही करता है अगर value ज़्यादा close है towards 0 कि everyone they have almost the same mother tongue. But India में अगर आप बात करोगे it is close to 1. मतलब no two people they have the same mother tongue. तो ये कहीं ना कहीं diversity show कर रहा है, clearly show कर रहा है. एंड ग्लोबल लेवल पे अगर हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करें तो वो डिक्लाइन हुई है बाय 20% ओवर द पीरियड फ्रॉम 1970 टिल 2005. मतलब 35 years में 20% डिक्लाइन हुआ इन लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी.
सो डिक्लाइन अगर हम बात करें कहाँ पे ज्यादा हुआ है, 60% अमेरिकाज में, 30% पैसिफिक में इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, 20% अफ्रीका में. So any loss of language, it is not only a loss of linguistic diversity, but it is also a loss in terms of associated जो cultural variations हैं, opinions हैं, views and knowledge as well. तो it is not just कि हम ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं कि language diversity या फिर language loss की हम बात कर रहे हैं, तो उसका repercussions बाकी areas में भी होता है. सो यूनेस्को की रिपोर्ट 2018 की रिपोर्ट अगर हम देखें तो 42 languages they are heading towards extinction in India. So these were spoken by less than 10,000 people and according to the norms जो यूनेस्को ने norms set किए हैं, अगर कोई भी ऐसी language है which is spoken by only 10,000 people तो it is potentially endangered. एंड इसके अलावा जो ये लैंग्वेजेस दे आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, तो दे आर मेजरली फ्रॉम द इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप्स व्हिच आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया. सो वी आर अलार्म्ड, वी आर कंसर्न्ड अबाउट जो हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहे हैं या फिर लॉस ऑफ स्पीशीज हो रहे हैं, बट वी आर नॉट पेइंग सो मच ऑफ अटेंशन व्हेन इट कम्स टू लिंग्विस्टिक लॉसेस. सो अब हमें ये सोचने की जरूरत है कि कैसे हम इस चीज को रोक सकते हैं, हाउ वी कैन ट्राई दिस थिंग इन डिफरेंट वेज एंड यूज डिफरेंट मीन्स so as to preserve these endangered languages. And apart from this, बेसिकली इन लैंग्वेजेस को हम कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं, तो इनको हम कैसे स्प्रेड कर रहे हैं, दैट इज थ्रू वीडियो टेप्स रिकॉर्ड करना, ऑडियो टेप्स एंड जो रिटन रिकॉर्ड्स है दीज लैंग्वेजेस को उनको प्रिजर्व करना एंड उनको अगेन ट्रांसलेट करना इन अदर लैंग्वेजेस. सो ये माना जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस है दे विल एमुलेट दिस एंड they will also help in reducing the disappearance of these languages in whichever way they can. एंड जब हम आसियान समिट की भी बात कर रहे हैं तो सिचुएशन इन म्यांमार पे भी बात की गई. तो ASEAN did well to call out the Myanmar junta's repression of the dissidents. So 10-member ASEAN Association for Southeast Asian Nations finally shown the courage to call out junta in the Myanmar for the ongoing violence, its failure in implementing the 5-point consensus that was reached between the two sides. Even जब हम यहाँ म्यांमार में भी जो मिलिट्री को है जो सिचुएशन है उसमें इंडिया का क्या रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ यू नो trying to bring the situation back to normalcy. And again ये जो situation है म्यांमार में, how this has impacted India, this is also important. And then again role of ASEAN भी important हो जाता है. So जो again plan था, 5-point plan था, वो Myanmar didn't adhere to those 5-point which were there. So ASEAN strongly condemned the continued acts of violence, directly urged the armed forces in particular and जितने भी related parties concerned parties हैं to stop targeted attacks on civilians. And साथ ही साथ म्यांमार को चेयरमैनशिप भी नहीं दी गई है ऑफ द ASEAN, जो expected था कि it would be assuming in 2026. So because of the situation and because of the actions जो वहाँ पे लिए जा रहे हैं in the Myanmar, again it has been denied the chairmanship of ASEAN for 2026. So Philippine को chairman has been shifted. So only solution to the multiple crises Myanmar is facing is the restoration of the legitimate, responsible and responsive regime. So let's see how Myanmar would now react.
So let's understand, this is an important topic from GS3. आरबीआई की जो लेंडिंग गाइडलाइंस में चेंजेस हुआ है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि आरबीआई ने न्यू गाइडलाइंस इशू किस लिए की हैं, एंड इसके अलावा बेसिकली इसके थ्रू ये इनेबल ये किया जा रहा है जो बोरोवर है टू ट्रांजिशन फ्रॉम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बेस्ड लोन्स टू वन जहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है। तो बेसिकली बोरोवर को ज्यादा कैन से ऑप्शंस फ्रीडम दी गई है टू डिसाइड कि आप कौन से इंटरेस्ट रेट स्कीम के साथ स्टिक करना चाहोगे। एंड अगेन हाउ डू लेंडर्स दे कम्युनिकेट द इम्पैक्ट ऑफ स्विचिंग फ्रॉम फ्लोटिंग टू द फिक्स्ड रेट्स टू द बोरोवर्स, ये देखेंगे क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। एंड आरबीआई कैसे बोरोवर्स की रीपेमेंट कैपेसिटी को असेस करता है, कौन से पैरामीटर्स इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं फॉर दैट। सो आरबीआई की चेंज गाइडलाइंस एग्जैक्टली हैं क्या, तो एपिक्स बैंकिंग रेगुलेटर जो आरबीआई इट इज गिवन बोरोवर्स द ऑप्शन कि वो स्विच कर सकते हैं फ्रॉम द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट टू द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। सो ये कहीं ना कहीं it would be based on a board approved policy which is drafted by the lending entity। एंड साथ ही साथ ये भी मेंशन किया जाएगी कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने स्विच किया है बिटवीन दीज टू इंटरेस्ट रेट्स। एंड अगेन जो लेंडर हैं दे नीड टू ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट टू द बोरोवर जितने भी रेलेवेंट चेंजेस हो रहे हैं अलोंग साइड द सर्विस चार्जेस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है, विच आर एसोसिएटेड अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है बिटवीन द इंटरेस्ट रेट। तो लेंडर के लेवल पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना इन द कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्या चेंजेस, क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या चार्जेस लगाए जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड रेस्ट विद द लेंडर टू कम्युनिकेट क्लियरली कि टाइम ऑफ लोन सैंक्शन क्या है, इम्पैक्ट क्या होगा इंटरेस्ट रेट रिजीम चेंज करने का ऑन दी ईएमआई, एंड टेन्योर ऑफ लोन कैसे चेंज होगा। तो अगेन यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। सो डिफरेंस क्या है फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के बीच में, तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट हैं जहाँ पे वी सी दे डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लोन। तो मतलब जितना भी टेन्योर ऑफ द लोन है इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे चाहे रेपो रेट में कुछ भी चेंजेस हो रहे हो। और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो नेम इज क्लियर, जैसे जैसे मार्केट में सिचुएशन चेंज हो रही है रेपो रेट चेंज किया जाता है तो अकॉर्डिंगली फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में भी चेंजेस आते हैं। सो यहाँ पे अगेन they are subject to market dynamics and the base rate, तो risk differentiation exist करता है। and floating interest rate जो है generally they are lower than the fixed interest rate। so floating interest rate for home loans 10.5% है, fixed interest rate जो है वो 12% है। तो fixed interest rate generally high भी इसलिए रहते हैं क्योंकि उसमें आपको changes ऐसा कर नहीं सकते। तो again जो बैंक का हम बोल सकते हैं रिस्क है वो कहीं ना कहीं उसको कवर करने के लिए या अनसर्टेनिटी वाला जो एलिमेंट है उसको कवर करने के लिए फिक्स इंटरेस्ट रेट जनरली हायर लेवल पे मेंटेन किया जाता है। सो जनरली यही माना जाता है कि हमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट regime ही चूज करना चाहिए क्योंकि इट इज बेटर टू एडजस्ट देयर पोजीशन एज पर द इवॉल्विंग मार्केट डायनामिक्स, क्योंकि उसमें चेंजेस होते रहते हैं जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं। एंड अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली कम हो रहा है तो अगेन वो बोरोवर के लिए एडवांटेजेस है। और फिक्स इंटरेस्ट रेट में ऐसा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस हो ही नहीं सकते हैं। तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट ही पे करना पड़ेगा ड्यूरिंग द इंटायर टेन्योर ऑफ द लोन। एंड दूसरी साइड अगर हम बेनिफिट्स की भी बात करें फिक्स इंटरेस्ट रेट की, तो वहाँ पे अगर हम बात करें सर्टेनिटी एंड सिक्योरिटी टू द बोरोवर, तो ये एलिमेंट ज्यादा रहता है। यू आर मोर सर्टेन एंड सिक्योर, सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग इंडिविजुअल का जो बजट्स की अगर हम बात करें। एंड जो और प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स हैं दे शुड नोट कि जो ब्रॉडर इवॉल्विंग इकोनॉमिक डायनेमिक्स हैं अकॉर्डिंगली डिसाइड कि वो किस तरीके का टेन्योर सिलेक्ट करना चाहेंगे। से कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स थे फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के। एंड आरबीआई स्टांस क्या है ऑन असेसिंग द रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर्स।
सो आरबीआई ने अपने सर्कुलर में इट इज मेंशन्ड कि जो lending entities हैं they are required to consider repayment capacity of the prospective buyers, sorry borrowers. So this is also to allow कि borrowers जो adequate headroom है या margin है for the elongation of the tenure or increase in EMI. So parameters for the assessment क्या use किए जाएंगे? So RBI गवर्नर ने पहले state किया था कि banks they would have to consider payment capacity of the borrower and how long payment capacity would last. So he cautioned कि it would be necessary to avoid any unduly long elongation, which sometimes it may, going forward, it may camouflage the underlying stress in a particular loan. So extension, he stated it must be for reasonable. अगर हम extension की बात करते हैं of the tenure, तो again वहाँ पे भी it will be only valid if it is for a reasonable time period के लिए इसको और extend किया जाता है. So these are the guidelines and कुछ changes जो किए गए हैं by the RBI. हीट इंडेक्स क्या है एंड ये अगेन हमारे लिए मेजर करना इम्पोर्टेंट क्यों है? सो हीट इंडेक्स को हम बोलते हैं एपरेंट टेम्परेचर ऑल्सो. तो दिस इज अ मेजर कि कैसे टेम्परेचर फील्स टू ह्यूमंस. सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हीट इंडेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है अलॉन्ग विद एयर टेम्परेचर. तो एयर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो कैसे हीट इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है? तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट एंड इसको अगेन पब्लिश किया गया 1979 में. सो डॉक्टर स्टेडमैन ही पब्लिश 2 पेपर्स जिसमें अगेन इन्हीं लाइंस के ऊपर बात की गई जिसमें डिस्क्राइब किया गया कि कैसे कैलकुलेशंस की जाएंगी इंडेक्स की. एंड सो ड्यू पॉइंट होता है द टेम्परेचर जहाँ पे गैस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिक्विड स्टेट. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन कैलकुलेशन. इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, it is the temperature at which air cannot hold any more water vapor, and जो droplets of water की they begin to form at atmospheric moisture. कैलकुलेशन में 14 डिग्री सेल्सियस को ड्यू पॉइंट यूज किया गया एंड कुछ कंट्रीज ने अपना ही अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग इंडाइसेस को डेवलप किया है. सो इट इज वाई इम्पोर्टेंट क्यों है इसको मेजर करना ये समझते. तो हॉट एयर इट कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन द कोल्ड एयर. तो ये एक फैक्ट है. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो एयर की कैपेसिटी है टू होल्ड द मॉइस्चर वो भी इंक्रीज होती है. तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है एपरेंट टेम्परेचर या हीट इंडेक्स को. तो ह्यूमिडिटी जो है टिपिकली it is higher during heat waves, which is why heat index at the time it is usually higher than just the temperature, because humid air it can feel hotter to the humans, क्योंकि जो उनकी moisture carrying capacity है वो ज़्यादा increase हो जाती है जब temperature of the air increases. So how does high humidity impacts the human body? जब अगेन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है तो ह्यूमन बॉडी को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है? सो इट कैन लीड टू हीट स्ट्रेस, मतलब कि बॉडी इज अनेबल टू गेट रिड ऑफ एक्सेस हीट क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई है. सो ह्यूमंस यूजुअली जो मेंटेन करते हैं कोर टेम्परेचर इट इज बिटवीन द रेंज ऑफ 36 to 37 डिग्री सेल्सियस. सो बॉडी जब इट इज नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दिस एक्सेस हीट तो जो हमारा हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज होने लग जाता है बिकॉज हमारा कोर टेम्परेचर इंक्रीज रहता है. सो दिस कैन लीड टू हीट रिलेटेड एग्जॉशन एंड रैशेज ऑल्सो एंड और भी सिम्टम्स हो सकते हैं. सो इट कैन बी फेटल ऑल्सो अगर इसको टाइमली एड्रेस नहीं किया जाए. तो दैट इज वाई हीट इंडेक्स को मेजर करना इतना इम्पोर्टेंट है. सो हाई ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अगर हाई लेवल पे जो एक्सेस हीट है वी आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दैट बिकॉज हाई ह्यूमिडिटी है. तो अगेन perspiration एक मेथड है जिसके थ्रू वी लूज द ह्यूमन बॉडी हीट एंड ह्यूमन बॉडी अल्टीमेटली कूल्स इटसेल्फ. So humidity high है, it is difficult to sweat and at the same time sweat to evaporate भी एक difficult process हो जाता है when humidity is high. And दूसरी साइड की बात करें जब humidity low है तो evaporation of sweat easier हो जाता है. This makes the apparent temperature feel close to the actual air temperature. So हम again क्या measures ले सकते हैं if you want to
adapt. So heat index की value of 67 degree Celsius या इससे ज़्यादा की value, it can be extremely dangerous for the people and animals who have direct and prolonged exposure. So climate change के साथ we are seeing कि we are going to witness record breaking heat index values across the world. तो चीजें थोड़ी और risky होती जा रही हैं and they are becoming of more concern. So extreme conditions, again, investing in early warning systems, making changes to work timings, ये किया जा सकता है, and finding sustainable cooling solutions. ये कुछ possible solutions हैं जो हम implement कर सकते हैं. So Ukraine war again एक new dimension open up हो गया. We are seeing कि रशिया ने आर्म्स परचेज करे हैं फ्रॉम नॉर्थ कोरिया. तो अगेन इससे रिलेटेड क्या इश्यूज हैं जब हम बात करते हैं ग्लोबली इम्प्लीकेशंस की. सो ट्रेड बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड रशिया डिस्पाइट इंटरनेशनल सैंक्शंस रेजेस कंसर्न्स अबाउट क्या इम्पैक्ट होगा यूएन सैंक्शंस का. मतलब यूएन सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं, दे आर देयर, मतलब सैंक्शंस लगाने के बाद भी अगर आर्म्स ट्रेड किया जा रहा है बाय रशिया, तो अगेन और क्या सीरियस implications हो सकते हैं. So funding for the North Korea's weapons program and transfer of advanced technology to Pyongyang. So we're seeing flourishing military relationship on the two sides. You can just go through कि कौन से again arms buy किए गए हैं. जब बात करें irony of the Russia's new interest in North Korea's weaponry is that historically alongside China also कि मॉस्को जो था नॉर्थ कोरिया का टॉप आर्म सप्लायर था पहले बिफोर द सैंक्शंस एरा. So it also more broadly bankrolled the North Korean regime through aid before the collapse of communism and the end of the Cold War. So agar Moscow does not move towards becoming a regular customer for the embargoed North Korean arms, it will help Putin sustain his illegal war on Ukraine. But the potential and technological payoff for the Pyongyang, it could pose long-term hazards for the world and must also be considered. So इसके global implications हो सकते हैं. It would obviously be not limited to North Korea or Russia. So at G20, Japan backs India, not China, as a bridge to global south. So India's growing role, specifically when we talk about as a voice of the global south, putting forward the interest and the demands or the objectives, what we desire for. This is important, and again, global support for India taking up this role, that is also important. And obviously, China is nowhere in this race. So Japan sees a rivalry over the leadership of the global south between India and China, and it is in interest of Japan and G7 कि India plays the leading role in the global south and China वो role ना play करे. तो अगेन G20 समिट पे हमारे लिए आउटकम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. सो वी आर वेटिंग फॉर दैट. वी आर सीइंग the foreign dignitaries, they are arriving in India. Bilateral meetings होने वाली हैं. So concert of rare instruments that was held at the president's dinner. तो ये सारी चीजें भी important है. We need to see कि again culturally क्या चीजें promote की जा रही हैं, क्या install की जा रही है. तो concert was titled भारत वध्य दर्शनम, मतलब म्यूजिकल जर्नी ऑफ इंडिया. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द संगीत नाटक अकेडमी, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री. So they'll be featuring 34 Hindustani musical instruments, 18 Carnatic music instruments, and 26 folk musical instruments from across the country.
सो यहाँ पे कुछ रेयर इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज किए जाएंगे, जिनको प्ले किया जाएगा, वन ऑफ देम इज कमाइचा, which is used by the Manginair community of Rajasthan. Then Nal Tarang, which is created by Baba Alauddin Khan of Mehar, Madhya Pradesh. Then Rudraveena, considered one of the most ancient instruments. So some of these would be played. So Aditya L1 has also sent us some pictures, and this is one of them. आप देख सकते हो images of Earth and the Moon. So these were released by ISRO. So Aditya L1, it is heading towards the L1 point. सो आने वाले टाइम में क्या न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, इससे रिगार्डिंग भी थोड़ा अगेन इसको भी क्रिटिकली देखा जा रहा है। आसियान समिट की हम बात कर रहे हैं, तो इंडोनेशिया वार्न्स अगेंस्ट द न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। सो इंटरैक्शंस बिटवीन ऑफिशियल्स फ्रॉम यूएस एंड चाइना, दे आर बीइंग क्लोजली वॉच्ड एज दे सीक टू कंट्रोल टेंशंस दैट रिस्क फ्लेयरिंग अ न्यू ओवर इश्यूज ranging from Taiwan to ties with Moscow. तो ताइवान स्ट्रेट में पॉसिबली बात की जा रही है, जो न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स का यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो न्यू कोल्ड वॉर अवॉइड करना इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिकली व्हेन द सिचुएशन इज ऑलरेडी सो चैलेंजिंग। So systematic repression म्यांमार में, it is crushing Myanmar. This is what UN has to say. So यहाँ पे आप ये phrase यूज कर सकते हो, term यूज कर सकते हो, systematic repression. So again, food inflation की वजह से we are seeing the repercussion. Cost of vegetarian thali increased 24%, non-veg thali's cost rose by 13%. तो हमारे लिए अगेन मेजर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वी नो कि इन्फ्लेशन हाई लेवल पे चल रही है, स्पेसिफिकली फूड इन्फ्लेशन। सो फूड इन्फ्लेशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग ई कॉमर्स पॉलिसी। सो अगेन उसके फीचर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे वंस दैट इज पब्लिक। सो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की सिग्निफिकेंस is very important. So it is going to generate 9 million jobs by 2024. So Indian household consumption, it could quadruple by 2030, जो again food processing industry को boost करने में काफी help कर सकता है। So food processing industry की जो different again schemes जो government ने launch की गई है to promote this sector, that is important. And contribution in GDP growth rate के बारे में आप देख सकते हो क्या challenges face करने को पड़ रहे this industry को। So that is also important thing that needs to be looked into. So G20 से हम क्या expect कर सकते हैं यहाँ पे। Again, we can say कि discussing some of the key economic, financial and regulatory matters, and we are seeing कि differences over the Ukraine war जो है वो challenge है हमारे लिए। Linking the debt relief with the climate issues, ये एक focus area हो सकता है। Developmental issues are going to be the focus area. So importance of the summit is that कि stage has been set for the summit by multiple rounds of meetings जो हो रही थी last year से, and डेवलपमेंटल इश्यूज पे मेन फोकस होने वाला है। एंड उसके अलावा stitching together a joint declaration critical for India, because given the credibility it can give the country's role, it can give to the country's role on the world stage. So if we are successful here in terms of having a joint declaration with China and Russia being part of it, तो उसकी वजह से जो इंडिया का अगेन ग्लोबल रोल है, सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है।
सो हम क्या अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी अगर हम बात करें तो the different topics like finding ways of strengthening multilateral financing, finding resources for climate action, digital public infrastructure-led financial inclusion, ensuring transparency of the beneficial ownership of the legal persons, evolving regulatory framework for the virtual digital assets, addressing debt vulnerability of the nations in the wake of tight global financial conditions and international taxation. So ये सारे important keywords हैं. They're extremely important. You can note them down. So इनके अराउंड डिस्कशंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो बिगेस्ट कंसर्न यही है जॉइंट डिक्लेरेशन जिसमें चाइना एंड रशिया दोनों सेम पेज पे रहें. एंड कंसेंसस इज इम्पोर्टेंट गिवन कि जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में देखने को मिल रहा है तो इसलिए जॉइंट कम्युनिकेशन जॉइंट डिक्लेरेशन और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है. सो ग्लोबल टैक्स डील की अगर हम बात करें तो दिस इज ऑल्सो वन एरिया जहाँ पे अगेन डिस्कशंस आर गोइंग ऑन. ग्लोबल टैक्स डील दो पिलर्स हैं. वन इज ऑन डिजिटल इकोनॉमी फर्म. सेकंड ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट 15% डिसाइड करना. So talks they're in progress right now. So reforms of multilateral banks, that is also another important agenda. So reforms of multilateral banks में again we are seeing कि the report एक release की गई है by the independent panel comprising 15th Finance Commission Chairman N.K. Singh, former US Treasury Secretary. They have called for reforms of multilateral development banks. Second part of the report is expected in October. So update on reforming these global financial agencies to be able to deal with the challenges of 21st century. ये एक important dimension है. So जो panel की recommendations है, they have used the word radically reform करने की जरूरत है and उनको strengthen करने की जरूरत है. Quote of the day is coming from President of Indonesia. So he says, every leader has an equal responsibility to not create new conflicts, to not create new tensions, and at the same time, we also have a responsibility to lower heated tensions. So ASEAN Summit ki lines pe we have his views. Now again, यहाँ पे India is seen as a combination of openness, opportunities, and options. So India is playing significant role जब बात करते हैं strengthening multilateral trading system and promoting rules-based global trade. अब इसके बारे में ये जो दो dimensions यहाँ mention किए गए हैं strengthening multilateral trading system, तो with examples आप यहाँ पे बात करोगे and second promoting rules-based global trade. तो यहाँ पे भी इंडिया ने क्या steps लिए हैं. हीलिंग हार्मनी एंड होप G20 प्रेसिडेंसी इंडिया की बात करें सो यहाँ पे यू नीड टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स. माइलस्टोन्स क्या हैं टेक्निकली थोड़ी सी यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिखेंगे. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो बोल्ड रिफॉर्म्स अंडरवे फॉर द न्यू चैलेंजेस. तो क्या न्यू रिफॉर्म्स या बोल्ड रिफॉर्म्स की बात की जा रही है एंड न्यू चैलेंजेस क्या है ये पता होना इम्पोर्टेंट है. So the president of the bank says, Asian Development Bank, जो हमारा न्यू ऑपरेटिंग मॉडल होने वाला है वो एक्सेलरेट करेगा 4 क्रिटिकल शिफ्ट्स फॉर दिस बैंक. फर्स्ट क्लाइमेट चेंज के एरिया में प्राइवेट सेक्टर, सॉल्यूशंस ओरिएंटेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेज ऑफ वर्किंग. सो मई में लॉन्च की गई थी इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक. एंड ये बेसिकली डोनर्स को अलाउ करता है टू गारंटी द एग्जिस्टिंग सॉवरेन लोन्स ऑन एडीबी's बैलेंस शीट. सो 12 पॉइंट प्रपोजल फॉर कॉपरेशन आप इसको सर्च करोगे कि क्या 12 पॉइंट्स की बात की गई है. आसियान समिट की हम यहाँ बात कर रहे हैं विच वाज हेल्ड इन जकार्ता इंडोनेशिया में. सो समिट में और जो बाकी डिसीजंस लिए गए टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन वाले एरिया में, दैट इज इम्पोर्टेंट एरिया.
So here we have small interview of Dr. Manmohan Singh. He's been talking about कि इंडिया का जो stand रहा on the Ukraine war, that has been right in terms of putting India's interest first. तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो as an example, जो हमारा oil trade रहा और the share of Russia's exports to India in terms of crude oil that has increased massively. तो again जो हमारे interest थे, we obviously we put them first and उसके बाद we thought about the other aspects. तो टारगेटेड क्रिप्टो कर्व्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबली हम अगर बात करें ग्लोबली एक प्रायोरिटी है. सो टोटल बैन इज टफ टू इन्फोर्स. टोटली आप क्रिप्टो करेंसी यूसेज को बैन नहीं कर सकते हो, वो डिफिकल्ट भी है करना. बट क्रिप्टोज दे शुड नॉट बी लीगल टेंडर. एजेंसीज का ये कहना है कि आप क्रिप्टोज को लीगल टेंडर स्टेटस नहीं दे सकते हो. सो व्हाट इज ऑन द स्टेटस अगर हम G20 समिट की ऑफ लेट बात कर ही रहे हैं तो सो स्ट्रेंथनिंग एमडीबीज ये मेन एजेंडाज है जिन पे फोकस रहेगा. स्ट्रेंथनिंग एमडीबीज, ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स, financing cities of tomorrow, managing the debt vulnerabilities, financial inclusion via digital public infrastructure, financing of SDGs, climate finance, country-driven impact assessment of the climate change, and international taxation. So यहाँ पे with examples चीजें लिखी गई हैं. This is very very important chart. You can take a screenshot of it. Green transition decisions, again यहाँ पे भी सब examples mentioned है. Energy transition, climate change, major part of the G20 summit. So किन किन चीजों पे ऑलरेडी अग्रीमेंट हो चुका है एंड कहाँ पे और होना बाकी है, कहाँ पे हमारे इनसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सब मेंशन्ड है. चाहे आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करो, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस की बात करो, इंक्लूसिव एनर्जी इंटेंसिव इंक्लूसिव इंडस्ट्री क्रिएशन की बात करो, टेक्नोलॉजिकल एडवांस टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस and reliable, responsible, sustainable supply chains of critical minerals, promoting investments in new industries and technologies, reskilling पे focus, promoting grid interconnections and cross-border power stations, global net zero greenhouse gases emissions, accelerate clean and affordable inclusive energy transitions, target to double the global rate of improvement in energy efficiency by 2030, advance sustainable biofuels and hydrogen, and the world needs annual investment, कितना funding required है, सब एक जगह mentioned है. So we talk about the board independence, that is at 50%, and gender diversity जो है that is sluggish. So जो global best practices हैं suggest कि more than half the board it must comprise. तो first point है independent directors होने चाहिए. Indian regulations जो है they mandate for the board independence that is driven by who chairs the board. So given that just 60% of listed companies have within Nifty 500, they are family owned. जो promoters है they tend to be the board chairs. So therefore, जो average board independence in Nifty 500 companies की, it is around only 50%. And meanwhile, जो number of women है holding the board directorships, that has doubled from 5 to 6% level before the Companies Act ushered in to right now it has at 11% within a year of its enactment in 2014. So एक ये progress है, but again जब हम gender diversity की बात करते हैं वो sluggish है, वो इतना ज़्यादा हमें वहाँ पे इतनी ज़्यादा progress नहीं देखने को मिली. जब समिट्स हो रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है कीवर्ड्स क्या यूज किए जा रहे हैं. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जब हम इंडिया आसियान समिट की भी बात कर रहे हैं, 12 पॉइंट सब जगह मेंशन है, आपको सर्च करना है कौन से 12 पॉइंट्स है. रेगुलेटिंग क्रिप्टोज, अगेन अगेन आप उसको बैन तो कम्प्लीटली नहीं कर सकते, हम देख चुके हैं.
ये आर्टिकल हम देख चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंडिया का स्टांस ऑन द यूक्रेन वॉर, अपने इंटरेस्ट को पहले रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा एंड दैट वाज द राइट थिंग टू डू फॉर इंडिया। So Supreme Court hands over its Green Watchdog Committee to Environment Ministry. So 2 decades after जब उसको बनाया गया by the Supreme Court to flag the cases of official non-compliance with its orders related to conservation, so जो Central Empowered Committee है, it will now report to the Environment Ministry and members nominated किए जाएंगे, nominate किए जाएंगे and जो final say रहेगी in the merit of its recommendations. So earlier this committee used to report to the Supreme Court. Now it would be reporting to the Environment Ministry. And this has been done in the interest of all the stakeholders involved. So 2002 में इसको setup किया गया, 2008 में इसको reconstitute किया गया, and it has rendered human services to the cause of environment. Thousands of reports file की गई. So effectiveness of its functioning आप थोड़ा और with example search कर सकते हो about its working. सो मेनली जो और तो कोई नया हम टॉपिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आसियान समिट के राउंड आज हमने काफी बात करी, टॉक्ड अबाउट G20 समिट क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सप्लेन पेज पे देख लेते हैं। 5 थिंग्स टू नोट अगेन G20 समिट के ऊपर ही है। सो बिल्डिंग कंसेंसस एक ये इंपॉर्टेंट है इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये एक हमारे लिए मेन चैलेंज है। देन G20 इन एवरी इंडियन स्टेट, स्मॉलर सिटीज एज वेल, वहां से हमारे लिए क्या एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। Deliverables for now and for future presidencies, voice of the global south, especially Africa, African Union join करने वाला है, ये एक important development है, और China's conundrum and the G20 challenge. So this is the Lord of Dance. बात करें नटराज, we are seeing Chola and Nataraj अगर हम historically talk about its origin and the significance. So all 3 temples, they were built by the Cholas who were at peak from the 9th to 11th centuries AD. They rule over much of the peninsular India. So among the icons which form the most important part of the Chola sculptures की अगर हम बात करें तो Shiva figures they predominate. Although very fine जो Vaishnava and Jain images हैं, they are not unknown. They were also present. So although Shiva was the first portrayed in sculpture as Nataraj in the 5th century AD, जो present है world famous form that has evolved under Cholas. So Nataraj image in its various forms holds the first place among the Chola bronzes. So it's called the Lord of Dance also. So Shiva is death and time, Mahakal, which destroys all things. But he's also a great aesthetic and patron of aesthetics generally. So he's the Lord of Dance, Nataraj, said to have invented no less than 108 different dances. Some of them are again promotes calm and gentle, others are fierce and orgiastic and terrible as well. So again, you can expect a question कि you need to describe the entire structure या जो भी elements हैं. So it's all about G20 summit के अराउंड ये आइडियाज चल रहे हैं. So Japan का moon mission takes off, expected to land next February. So let's see how it would be performing. So JAXA, Japan's aerospace exploration agency है. So it is being released the smart lander for investigating moon. So SLIM is the name of the mission. So SLIM belongs to Japan.
$100 million mission है, expected to start the landing by February next year. तो डार्क पैटर्न से रिगार्डिंग भी टू क्रैक डाउन ऑन दीज गवर्नमेंट ने कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू करी है. सो फॉल्स अर्जेंसी दे बेसिकली इम्प्लाई करते कि सेंस ऑफ अर्जेंसी टू मिसलीड द यूजर इनटू मेकिंग एन इमीडिएट परचेज. देन बास्केट स्नीकिंग, ये सारी डिफरेंट terms this is associated in nagging, disguised ads, strip pricing. Elements of prices are not revealed upfront, they are revealed superstitiously. Bait and switch, इंटरफेस इंटरफेरेंस, सब्सक्रिप्शन ट्रैप होता है, फोर्स्ड एक्शन. सो इन सब को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू करी है. सो रेस्ट टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. बट आई वुड से कि आज के टॉपिक्स they're very important. So I guess there's some problem in screen sharing as well. So that's all for today. Do subscribe to the channel and stay tuned for further videos.